We have talked about liquidity, its importance, and its calculations. We have also talked about the ratios and measures which are related to the calculation of liquidity position of a business organization. Now, one by one, we are going to explore these ratios and measures, and we'll see that how we calculate and use these ratios. So we begin with what is called the current ratio. As the name suggests, it is a ratio or relationship of two current items, that is, current assets and current liabilities. Current assets are those which have got a normal useful life of less than 1 year, and current liabilities are those liabilities which are payable within 1 year time period. So we divide the current assets with current liabilities and we get a certain number. As you can see, if our current assets are 250,000 and our current liabilities are 100,000, we'll get a current ratio of 2.5. This 2.5 is actually times, which means that our current assets are 2.5 times of our current liabilities. जितनी ये रेशो ज़्यादा होगी उतनी ही लिक्विडिटी बेहतर समझी जाएगी, यानी जितने ज़्यादा करंट एसेट्स अवेलेबल हैं हमारी करंट लायबिलिटीज़ को पे करने के लिए, उतनी ही हमारी लिक्विडिटी बेहतर है। करंट रेशो एक ऐसी रेशो है जिसके लिए एक जर्नल स्टैंडर्ड भी मौजूद है और इसके अलावा बहुत से स्पेसिफिक बेंचमार्क, यार्डस्टिक्स या स्टैंडर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। हम कहते हैं कि अगर करंट रेशो 1.5 और 2 के दरमियान कहीं है तो ये एक अच्छी करंट रेशो समझी जाती है। बट एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर that in some cases we have to consider this ratio to be equal to or more than a certain level, यानी किसी ख़ास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्री में या किसी ख़ास कोवेनेंट की वजह से कई मरतबा हमें इस रेशो को इस स्टैंडर्ड से ऊपर भी ले जाना होता है ताकि लिक्विडिटी पोजीशन को एक ख़ास लेवल पे मेंटेन किया जा सके। Then the second measure or the second ratio of measuring liquidity is what is called the quick ratio. क्विक रेशो हमें ज़्यादा शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के बारे में बताती है, क्योंकि इसमें हम करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्री पेमेंट्स को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास जो कुछ रह जाता है वो करंट एसेट्स हैं जिनको थोड़े अरसे में, इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, वी कैन कन्वर्ट दैम इनटू कैश। इन्वेंट्री को क्यों ज़्यादा मुद्दत लगती है कैश में कन्वर्ट होने के लिए? इसलिए कि पहले हम इन्वेंट्री को बेचते हैं और जब इन्वेंट्री को हम बेचते हैं तो वो अकाउंट्स रिसीवेबल्स में कन्वर्ट हो जाती है और अकाउंट्स रिसीवेबल हमारे पास कुछ अरसे तक रहते हैं और उसके बाद हमें कैश रिसीव होता है। इसी तरह जो प्री पेमेंट्स हैं वो पेमेंट्स हैं कि जिनको हम एक्सपेंसेस की शक्ल में उनके होने से पहले पे कर देते हैं। तो ये प्री पेमेंट्स कैश में कन्वर्ट नहीं होती बल्कि एक्सपेंस में कन्वर्ट होती हैं, यानी हमने एडवांस रेंट पे कर दिया तो ये रेंट की पेमेंट जो हमने पहले कर दी है ये कैश में कन्वर्ट नहीं होगी बल्कि कुछ अरसे में एक्सपेंस आउट हो जाएगी। इसलिए इन दोनों अमाउंट्स को हम करंट एसेट्स में से माइनस करते हैं तो हमारे पास क्विक एसेट्स आते हैं, वो एसेट जो हमें इमीडिएट लिक्विडिटी बताते हैं। For example, if we have got 120,000 worth quick assets and 100,000 worth current liabilities, then the quick ratio is 1.2. And if we have got current assets equal to 250,000, then we'll deduct inventory and prepayments. Let's say we have got 100,000 rupees inventory and 30,000 rupees prepayments. So we'll end up with a figure of quick ratio. Again, the general standard for this ratio is 1. But depending upon the industry, depending upon some of the covenants,
there may be a requirement of having a higher quick ratio. By the way, ये रेशो, करंट और क्विक रेशो, जितनी बढ़ती चली जाएंगी, जितनी ज़्यादा होंगी, लिक्विडिटी उस कंपनी की उतनी ही बेहतर समझी जाएगी. एंड देन द थर्ड वन इज कैश रेशो. यानी ये वो रेशो है जिसके अंदर हम मोस्ट लिक्विड एसेट्स, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, उनको करंट लायबिलिटी के साथ कंपेयर करते हैं. एंड दिस रेशो इज सर्टनली लेस देन द क्विक रेशो एंड करंट रेशो. So this ratio tells us that what is the immediate balance of cash to pay off our current liabilities. क्योंकि current liabilities एक साल में पे होनी है और immediately पे नहीं होनी, इसलिए ये रेशो करंट लायबिलिटीज से बहुत कम होती है. यानी करंट लायबिलिटीज का वो हिस्सा जो हमें थोड़ी ही मुद्दत में पे करना है, उसको मीट करने के लिए हम कैश की रिक्वायरमेंट रखते हैं. So you can see that if a cash in hand and equivalents are equal to 30,000 rupees and the liabilities, current liabilities are 100,000, then it will be 0.3, and a 0.3 cash ratio is not bad. Cash ratio should be maintained at what level? अगर किसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शंस हैं, कैश फ्लोज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर हमें कैश रेशो को ज़्यादा रखना पड़ता है. यानी वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिन्हें बहुत ज़्यादा कैश पेमेंट्स रोज़ाना करनी होती हैं, उन्हें अपने कैश की वैल्यूज़ को और कैश बैलेंसेस को मेंटेन करना होता है एट अ मच हायर लेवल एज कंपेयर टू दोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस where the business is not very much based on cash transactions. There are certain regulatory authorities and there are certain regulations and rules which also require us to maintain certain levels of liquidity ratio. यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रूडेंशियल रेगुलेशंस के तहत बहुत सी रेशोज को जो लिक्विडिटी से रिलेटेड हैं, हमें एक सर्टन लेवल के ऊपर रखना होता है. And the last thing is that one thing is having a certain ratio of liquidity. We need to maintain it because हमें बहुत सी अथॉरिटीज़ के लिए इसको मेंटेन करना है, बैंक्स के लिए मेंटेन करना है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें अपने बिजनेस को स्मूथली चलाना है. यानी अगर बार बार ये सूरत हाल पेश आ रही है कि कैश अवेलेबल नहीं है और लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, हमें पेमेंट्स को डिले करना पड़ता है, तो न सिर्फ ये हमारी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी के लिए ख़राब होता है, बल्कि इसकी वजह से हमें कई दफ़ा फाइन्स और पेनल्टीज़ का सामना भी करना पड़ता है. So we need to maintain these ratios at a certain basic minimum level.